Good morning, learners. Today we will discuss a new topic that is on World War One. So, before going to start our discussion about the causes and consequences of the First World War, first we have to know some facts about the war. The war is considered as one of the largest wars in history. The world's great powers assembled into opposing alliances. The Allies, comprised of British Empire, France and Russian Empire, versus the Central Powers, comprised of Germany and Austria-Hungary. The war lasted from 28th of July 1914 to 11th November 1918. The war is also known as Great War, and this global conflict had its origins in Europe and earned the name the War to End All Wars. So ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, और मेनली दो अलायंस के बीच ये वॉर हुआ था. एक है द एलाइज, जहां पे ब्रिटिश एम्पायर था, फ्रेंच एंड रशियन एम्पायर था, और एक साइड में था सेंट्रल पावर्स, वहां पे था जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी. ये जो वॉर है उसको ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है. As we discussed earlier, there were mainly two alliances who participated in the war. The Allied powers comprised of France, Italy, Russia, Japan, and Britain. In the year 1917, the United States joined the alliance. Then another alliance was between Germany, Austria-Hungary, Ottoman Empire, Bulgaria, and this alliance is known as Central Power. India made a huge contribution to Britain's cause of the war. Almost 1.5 million Indians from parts such as Uttar Pradesh, Punjab, and Maharashtra volunteered the war. Then the next part of discussion is the phases of the war. We can divide the whole duration from starting to end of the war into three phases. First phase, we can say the opening campaigns in 1914. The war began with the opening campaigns marked by the initial German offensive known as the Schlieffen Plan, which aimed to swiftly defeat France before turning against Russia. This phase also witnessed major battles like the First Battle of Marne and the Battle of Tannenberg, where the Allied forces halted the German advance, leading to a stalemate and the establishment of trench warfare along the Western Front. The second phase is known as stalemate and attrition, lasted from 1915 to 1917. This phase was defined by a prolonged stalemate and a war of attrition, characterized by bloody battles like Verdun, the Somme, and the Gallipoli, where both sides suffered immense casualties with little territorial gain. This phase also saw the entry of new participants, including the Ottoman Empire and Italy, as well as the Ujjwal of Russia, following the 1917 Bolshevik Revolution. ये जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज में बहुत सारा पार्टिसिपेंट्स का एंट्री हुआ था, लाइक ऑटोमन एम्पायर, इटाली और रशिया ने मतलब वर्ल्ड वॉर से खुद को उज्जवल कर लिया था. Then the third phase is known as the tide turns, 1917 to 1918. The final phase witnessed a crucial turning point with the entry of the United States on the Allied side in 1917. This phase also saw the implementation of new military tactics and technologies such as the widespread use of tanks and aircraft. Ultimately, the combined efforts of the Allied powers, coupled with the exhaustion of the Central powers, led to the defeat of Germany and its allies. So, that जो लास्ट फेज है, लास्ट फेज एक क्रुशियल पॉइंट था, इसलिए क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का एंट्री हुआ था इन द ईयर 1917. और ये जो फेज में बहुत सारा नया मिलिट्री टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी भी यूज किया गया था, लाइक टैंक्स, एयरक्राफ्ट, एक्सेट्रा.
Then the war ended on November 11, 1918 with the signing of the armistice after the defeat of Germany and its allies. The conflict took place on multiple fronts in Europe, Africa, and Asia. The main fronts were the Western Front, and with Germany against Britain, France, and later the USA, and the Eastern Front, with Russia against Germany and Austria-Hungary. ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये कॉन्फ्लिक्ट मल्टीपल फ्रंट से हुआ था और उसमें से मेन जो फ्रंट थे वो दो थे, वो एक है वेस्टर्न फ्रंट एंड अनदर वन इज ईस्टर्न फ्रंट. Actually, there are several causes of the World War. The immediate trigger was the assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria by a Bosnian Serb nationalist on June 28, 1914. This event escalated into a conflict between Austria-Hungary and Serbia, which quickly drew in other powers due to the complex web of alliances and rivalries. So, immediate cause बोल सकते हैं हम लोग वर्ल्ड वॉर का, वो एक है कि assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria. एक जो बोस्नियन का सर्ब नेशनलिस्ट ने आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड का असैसिनेशन किया था, वो उसको हम एक मतलब इमीडिएट कॉज बोल सकते हैं वर्ल्ड वॉर होने का. Then next cause is imperialism. The late 19th and early 20th centuries saw a rivalry between established European imperial powers like Britain, France, and Russia, and the rising powers like Germany, Austria, Hungary, Italy, and Japan. These nations were competing fiercely for colonies, economic supremacy, and spheres of influence, fueling tensions. और एक कॉज था वर्ल्ड वॉर का, वो है imperialism. और ये जो मतलब दो एक्चुअली राइवलरी हुआ था बिटवीन जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड यूरोपियन एम्पेरियल पावर्स था लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, और न्यूली जो एम्पेरियल पावर राइज हुआ था लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया, उन दोनों के बीच एक राइवलरी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब नेशंस इकोनॉमिक सुप्रीमेसी, कॉलोनी, ये सब के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहा था, जिससे टेंशंस बढ़ रहा था. Then next point is colonialism. The Industrial Revolution fueled European powers' pursuit of colonial expansion for raw materials and markets, sparking conflicts over territories and resources. This race for colonies intensified rivalries and fueled nationalist sentiments, setting the stage for future confrontations. While Germany is generally blamed for World War I, the conflict was ultimately the result of competing colonial aspirations and rivalries among European powers. और एक कॉज है कोलोनियलिज्म. एक्चुअली जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए ब्लेम किया जाता है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं है. ये एक्चुअली एक रिजल्ट है जो मतलब जो कंट्रीज है उन लोगों का जो कॉलोनी एस्टेब्लिश करने का और कॉलोनी एक्सपांड करने का जो एस्पायरेशंस है, उसके वजह से ही ये वॉर हुआ था मेनली. देन अनदर cause is nationalism and demands for nation states. The rise of nationalism, both ethnic and linguistic, played a significant role in the outbreak of First World War. Various ethnic groups within Austria-Hungary and Ottoman Empire aspired to establish their own nation states. The desire for self-determination led to conflicts, particularly in the Balkan region. Then another cause, the role of Germany. Germany's aggressive pursuit of colonial expansion, naval build-up challenging British supremacy, and unwavering support for Austria-Hungary after the Sarajevo assassination fueled tensions and escalated the crisis. So, another cause of World War I is mutual defense alliances. The complex web of alliances like the Triple Entente between Britain, France, and Russia, and Triple Alliance between
Germany, Austria, Hungary, and Italy bound nations through treaty obligations. When Austria-Hungary declared war on Serbia after Sarajevo, Russia had to support its ally, Serbia. Germany then honored its alliance with Austria-Hungary, leading to declarations of war against Russia and France. Britain joined to support its Russian and French allies. These interlocking alliances divided Europe into opposing camps, transforming a local crisis into a continent-wide conflagration as countries upheld commitment to respective allies. So, और एक cause है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का कि जो कंट्रीज है उन लोगों का जो मतलब दूसरा कंट्रीज के साथ अलायंस फॉर्म किया था। एक अलायंस था ट्रिपल एंटेन, ये हुआ था ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया के बीच। और ट्रिपल अलायंस हुआ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली के बीच। तो ये जो अलायंसेस हुआ था, ये अलायंस ने बाउंड कर दिया था सब कंट्री को कि उनके जो एलाइड कंट्रीज है उसको हेल्प करे। तो जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के अगेंस्ट वार डिक्लेयर किया, देन सर्बिया को सपोर्ट करने के लिए रशिया को आना पड़ा। और जब और ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट करने के लिए जर्मनी आए। सो पहले ये जो वार था, ये पहले एक लोकल क्राइसिस था, लोकल मतलब कॉन्फ्लिक्ट था। बाद में ये एक कॉन्टिनेंट वाइड क्लैश हुआ। Now we will discuss the consequences of the First World War. We can say the war also impacted in the economic field. The participating countries in World War I incurred significant financial cost. Germany and Great Britain spent approximately 60% of their GDP on the war. To finance the war, countries raised taxes, borrowed money from citizens, and resorted to printing money, leading to post-war inflation. So, एक कॉज है इन द फील्ड इकोनॉमिक्स। तो क्या हुआ था, जब ये वार हुआ था, वार में बहुत सारा फाइनेंशियल क्या हुआ था, फाइनेंस लॉस हुआ था। जर्मनी और ब्रिटेन ने उनके जीडीपी का ऑलमोस्ट 60% इस वार पे लगा दिया था। और वार में फाइनेंस करने के लिए कंट्रीज थे उन लोगों ने टैक्स रेज करना पड़ा उन लोगों को। उसके बाद उन लोगों ने सिटीजन से मनी भी बोरो किया था। Then another consequence is in the political field, or we can say political consequences. First one is collapse of empires. The war led to the fall of 4 major empires: the Russian Empire, German Empire, Austro-Hungarian Empire, and Ottoman Empire. These paved the way for emergence of new nation states and redrawing of borders. एक political consequence है empires का collapse होना। ये जो वार था, इसके वजह से मेजरली 4 एम्पायर कोलैप्स हुआ था। एक था रशियन एम्पायर, अनदर इज जर्मन एम्पायर, देन ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड ऑटोमन एम्पायर। और ये जो कोलैप्स हुआ एम्पायर, इसके वजह से नया जो नेशन स्टेट्स इमर्ज होने का एक रास्ता निकल गया और बॉर्डर भी रीड्रॉ करना पड़ा। Then another political cause is rise of new nation states and territorial changes. The dissolution of the old empires led to the rise of several new nation states. These newly formed countries, including Poland, Czechoslovakia, Yugoslavia, Finland, Estonia, Latvia, and Lithuania, were largely established along ethnic and nationalist lines. और एक cause है नया नेशन स्टेट्स भी हुआ और टेरिटोरियल चेंजेस भी आया। जब ओल्ड जो एम्पायर्स थे वो सबका डिसोल्यूशन होने के बाद नया नया नेशन स्टेट्स आया, लाइक पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया एटसेट्रा। और ये सब जो नेशंस थे, ये सब बेसिकली एथनिक एंड नेशनलिस्ट जो इंटरेस्ट है उसके बेस्ड पे एस्टेब्लिश हुआ था। Then next
political cause, we can say weakening of European powers. The war significantly weakened the major European powers such as Britain, France, and Germany, both economically and militarily. This paved the way for the rise of new powers such as the United States and Soviet Union. ये जो वार हुआ था, ये वार ने जो यूरोपियन मेजर पावर्स थे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब कंट्री को इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली वीकेंड कर दिया था और नया जो पावर है उसका राइज हुआ, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन. देन अनदर consequence is the rise of nationalism and self-determination. The principle of self-determination gained traction, leading to the formation of new nation-states based on ethnic and linguistic identities. However, this also laid the groundwork for future conflicts as borders were redrawn, leaving some ethnic groups dissatisfied. Then, coming to the social consequences, the war had also profound impact on the society. Birth rates declined due to the high number of casualties, leaving millions dead, wounded, maimed, and creating widows and orphans. बहुत सारा मतलब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था सोसाइटी में इस वर्ल्ड वॉर के वजह से, क्योंकि बर्थ रेट जो था वो क्या हुआ था, डिक्लाइन हो गया था. क्यों? क्योंकि बहुत लोग मर गए थे और इसके वजह से बहुत सारा विधवा और ऑर्फन्स भी हुआ था. Many civilians lost their land and became refugees, seeking shelter in other countries. Women played a crucial role in the workforce, replacing men in factories and offices during the war. War के टाइम पे जो वुमेन थे, वुमेन ने क्रूशियल रोल प्ले किया. उन लोगों ने जो फैक्ट्री था, ऑफिसेस था, वहां पे मैन को रिप्लेस किया था और उन लोगों ने काम किया था. और इस वॉर की वजह से बहुत सारा सिविलियंस को उनके जो प्रॉपर्टी थे लैंड से मतलब हाथ धोना पड़ा और वो लोग उन लोगों को रिफ्यूजी बनना पड़ा और उन लोगों को दूसरा देश में जाके मतलब शेल्टर मांगना पड़ा. So apart from that, because of war, many countries granted women more rights, including the right to vote. The First World War challenges the dominant role of the upper classes, as the middle and lower class demanded a say in shaping their countries. Another consequence in the international field. So the global order underwent a significant shift, with the United States establishing itself as a major power and the Soviet Union inspiring other nations to adopt communist ideologies. This set the stage for ideological struggle between capitalism and communism, known as the Cold War. Extreme nationalism and the fear of communist revolutions pushed some middle-class populations towards right-wing extremism and the rise of fascist movements. The League of Nations was established as an international diplomatic organization after the First World War. Its purpose was to prevent conflicts and resolve disputes between countries before they escalated into full-scale warfare. So, international consequence बोलने से हम लोग बोल सकते हैं कि लीग ऑफ नेशंस का एस्टेब्लिश हुआ था, लीग ऑफ नेशन सेटअप हुआ था. और ये जो लीग ऑफ नेशन है, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका पर्पस था सेटअप होने का कि जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो क्या करे, प्रिवेंट करे और कंट्रीज के बीच कोई डिस्प्यूट होने से उसको रिजॉल्व करे. सो in this video I have thoroughly discussed about the phases of the First World War. Then I have discussed the causes of the First World War, and at last I have discussed the consequences also. So who are watching my video, please subscribe my channel, and who have already subscribed, please share the video link with your friends and tell them to subscribe. Thank you.